गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह सीबीएसई क्लास 10th के साइंस के एग्जाम्स जो 2024 में होने वाले हैं उनके लिए आज चैप्टर 8 दैट इज हेरिडिटी न्यू सिलेबस के आधार पर ये चैप्टर 8 है और हेरिडिटी का सेकंड प्रैक्टिस लेक्चर लेने जा रहे हैं। और आज का जो प्रैक्टिस लेक्चर है वो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन से संबंधित है। तो बच्चों, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे आज कि असर्शन और रीजन में आपके दो स्टेटमेंट होते हैं, एक असर्शन का होता है, दूसरा रीजन का होता है। तो आपको इस तरह से कोड को सेलेक्ट करना है। फर्स्ट कोड कहता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दोनों असर्शन रीजन सही हैं और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के। बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। थर्ड इज सी, that is assertion is true but reason is false. D, assertion is false but reason is true. तो assertion reason से जो पहला सवाल है, first assertion is a genetics who study genetic is called geneticist. A geneticist crossed two pea plant. एक geneticist ने दो pea plant को क्रॉस कराया, okay, and got 50% tall. और क्या पाया? 50% tall and 50% dwarf in the progeny. प्रोजेनी जो हुई वो 50% dwarf और 50% tall प्रोजेनी प्राप्त हुआ। ओके, the reason is one plant was heterozygous. एक प्लांट जो थे वो heterozygous tall थे and other was dwarf. तो रीजन दे रहा है कि one plant was heterozygous tall. Heterozygous tall. Suppose this condition is heterozygous tall and other was dwarf. और दूसरा क्या था? dwarf था। गैमेट्स जो होंगे उसके किस तरह से बनेंगे? दिस इज द गैमेट, कैपिटल T, दिस इज द गैमेट। ओके, तो जब आप क्रॉस कराएंगे तो ये प्योर टॉल, फिर इसके साथ ये टॉल, और शॉर्ट जो होगा इसके साथ शॉर्ट और ये शॉर्ट, मतलब 50% टॉल एंड 50% शॉर्ट यू विल गेट। तो असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है। असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो क्यों कि असर्शन रीजन यहां दोनों ट्रू हैं। ओके, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर असर्शन। दिस रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू दिस असर्शन। एक बार फिर क्वेश्चन को समझिए। एक जेनेटिक्स थे जिन्होंने दो पी प्लांट को क्रॉस कराया और पाया 50% टॉल और 50% ड्वार्फ, 50% टॉल 50% ड्वार्फ प्रोजेनी प्राप्त किया। इसके लिए रीजन है वन प्लांट वाज हेट्रोजाइगस टॉल एंड अदर वाज ड्वार्फ। ओके, तो हियर इफ यू मेड क्रॉस बिटवीन हेट्रोजाइगस टॉल एंड शॉर्ट यू विल फाइंड कि अगर मान लीजिए कि वन पैरेंट वाज हेट्रोजाइगस टॉल, सी हियर रीजन के वन पैरेंट वाज हेट्रोजाइगस टॉल, दिस पैरेंट इज हेट्रोजाइगस टॉल एंड अदर वाज ड्वार्फ। तो देखिए गैमेट फॉर्मेशन के समय ये क्या होंगे? अलग हो जाएंगे गैमेट्स। दिस इज टी टी एंड दिस इज ऑल्सो टी टी। तो व्हाट दिस एंड दिस, ये टॉल हुआ एंड दिस ये हुआ आपका टॉल, दिस विथ दिस इज शॉर्ट एंड दिस इज शॉर्ट। सी हियर दिस इज शॉर्ट एंड दिस इज योर हेट्रोजाइगस टॉल, दिस इज टॉल, मतलब 50% आपके ये टॉल हो गए और 50% आपके शॉर्ट हो गए। तो असर्शन और रीजन, असर्शन ट्रू है and reason is also true and here reason is correct explanation of assertion. ये reason का है, तो assertion is true, reason is true and reason is correct explanation of assertion. Okay, assertion is true, reason first का आंसर A कोड से होगा। both A and R are true, R are true and R is correct explanation of assertion. R क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। दिस इज रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।
यहाँ रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन। सेकेंड असर्शन रीजन टाइप में, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड असर्शन है assertion. Second is मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट। मेंडल ने किस प्लांट को सिलेक्ट किया? पी प्लांट को सेलेक्ट किया फॉर हिज व्हाट? फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने मटर के पौधे को अपने प्रयोग के लिए सेलेक्ट किया। ओके, दिस इज ट्रू। पी प्लांट इज क्रॉस पॉलिनेटिंग। पी प्लांट क्या थे? क्रॉस पॉलिनेटिंग थे एंड हैज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। दिस इज रीजन। पी प्लांट रीजन में कह रहा है कि पी प्लांट इज क्रॉस पॉलिनेटिंग एंड हैज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, तो बच्चों मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। दिस इज ट्रू। मेंडल ने पी प्लांट को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया और ये सही है। और रीजन इज पी प्लांट इज क्रॉस पॉलिनेटिंग एंड हैज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। पी प्लांट क्रॉस पॉलिनेटिंग थे और इनके पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, रीजन में है। तो बच्चों नॉर्मली द पी प्लांट इज सेल्फ फर्टिलाइजिंग। पी प्लांट जो है नॉट क्रॉस पॉलिनेटिंग। क्या है पी प्लांट? पी प्लांट इज सेल्फ फर्टिलाइजिंग बिकॉज द पेटल एनक्लोजेस द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बिकॉज इसमें होता क्या है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सी द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दिस इज मेल गैमिट, दिस इज फीमेल गैमिट, और पेटल जो होते हैं इनके, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एनक्लोज किए रहते हैं। दिस इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द पी फ्लावर एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द पी फ्लावर इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर इज एनक्लोज्ड बाय पेटल। पेटल जो होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एनक्लोज रखते हैं। ओके, एंड टिल फर्टिलाइजेशन, जब तक कि इनका फर्टिलाइजेशन नहीं होता। जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज बीइंग एनक्लोज्ड बाय द पेटल, then it will be self pollinating, okay, self fertilizing. and flower इनके जो है यहाँ पर जो कह रहा है यूनिसेक्सुअल, तो फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। जो मटर के पौधे हैं, दैट इज मटर का फ्लावर है, दैट इज पी फ्लावर, फ्लावर ऑफ दिस प्लांट इज नॉट यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। तो रीजन तो हर तरह से रॉन्ग है। तो यहां किस तरह का आंसर होगा? दैट इज assertion सी, that is assertion is true here. Assertion is your true because Mendel has selected pea plant for his experiment. Because Mendel ने pea plant को ही अपने प्रयोग के लिए select किया था। Reason pea plant is cross pollinating. This is false because the reproductive part of this flower is enclosed by petals. मतलब कि ये पी प्लांट जो है वो सेल्फ फर्टिलाइजिंग है एंड पेटल एनक्लोज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो पेटल्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पूरे क्या कहते हैं, उसको एनक्लोज किए हुए रहते हैं जब तक कि फर्टिलाइजेशन नहीं हो जाए। ओके, और इनके फ्लावर यूनिसेक्सुअल ना होकर के बाइसेक्सुअल होते हैं। तो दिस इज फॉल्स। सो गो थ्रू विच ऑप्शन? assertion is true but reason is false. This is C. Answer is your C. ओके, और फर्स्ट का आंसर क्या था? अब थर्ड असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में, व्हेन प्योर ब्रीड टॉल प्लांट, जब प्योर ब्रीड टॉल प्लांट आर क्रॉस्ड विथ प्योर ब्रीड शॉर्ट प्लांट, प्योर ब्रीड टॉल प्लांट को क्रॉस कराया गया प्योर ब्रीड शॉर्ट प्लांट से, तो ऑल द प्लांट इन F1 प्रोजेनी, जितने भी प्लांट्स थे F1 प्रोजेनी में, आर टॉल। When all F1 progeny are crossed, फिर जब प्योर ब्रीड टॉल प्लांट को क्रॉस कराया गया प्योर ब्रीड शॉर्ट प्लांट से, तो F1 प्रोजेनी में जो भी प्लांट मिले सारे के सारे टॉल मिले F1 प्रोजेनी में। और जब F1 प्रोजेनी जो है उनको क्रॉस करा दिया गया, F1 प्रोजेनी को आपस में जब क्रॉस कराया गया तो शॉर्ट प्लांट रीअपीयर इन F2 प्रोजेनी, तो शॉर्ट प्लांट फिर आ गए F2 प्रोजेनी में। दिस इज असर्शन। तो दिस इज असर्शन इज ट्रू। प्योर ब्रीड टॉल प्लांट को अगर क्रॉस कराइएगा प्योर ब्रीड शॉर्ट प्लांट से, तो फर्स्ट F1 जनरेशन में प्योर टॉल ही आपको मिलेंगे। मतलब F1 प्रोजेनी में सारे पौधे जो होंगे वो टॉल होंगे। ओके, हाइब्रिड टॉल होंगे, टॉल होंगे। जो F1 जनरेशन में आपको पौधे मिले उनको अगर आप सेल्फ क्रॉस कराते हैं, सेल्फ क्रॉस शॉर्ट प्लांट रीअपीयर इन F1 प्रोजेनी,
जो सॉल्ट प्लांट F1 जनरेशन में नहीं अपने अपने को एक्सप्रेस कर पाए, वो F2 प्रोजेनी में आ जाएंगे। तो दिस असर्शन इज ट्रू एंड रीजन व्हाट ट्रेट्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। ट्रेट्स जो होते हैं वो मिक्सअप होके नहीं जाते हैं, वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड होते हैं। दिस रीजन इज ऑल्सो ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, assertion is true, reason is true and reason is correct explanation of assertion, और reason जो है correct explanation है assertion का। ओके, तो दिस इज थर्ड assertion रीजन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो assertion रीजन टाइप है, ये हेरिडिटी से है आपका बच्चों, और वीडियो के अंत तक हमारे बने रहिए। assertion रीजन टाइप क्वेश्चन ऑफ फ्रॉम हेरिडिटी, और हेरिडिटी से प्रैक्टिस लेक्चर हमारा सेकंड। अब फोर्थ assertion। नाउ फोर्थ assertion क्या है? assertion, ये assertion है, दिस इज assertion। ओके, ये फोर्थ, दिस इज assertion, फोर्थ, दिस इज फोर्थ assertion में द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड, द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड in human being, the sex of a child in human being will be determined by the sex of a child in human being will be determined by the type of chromosome, he or she inherit from his father. Chromosome, he or she inherit from his or her, from her father. Okay, this is assertion। sex of a child जो human being में है, human being में sex of a child will be determined by the type of chromosome inherited from the father. Type of chromosome inherit from her father, inherited from our father. So sex of a child in human being will be determined by the type of chromosome he or she inherit from her father. Reason, इसका reason है, reason is the child who inherit X chromosome from his father, X chromosome from his father would be a girl, रीजन में चाइल्ड जो एक्स क्रोमोसोम अपने पेरेंट्स से, फादर से लेते हैं, वो गर्ल होंगे, एंड girl, while child who inherit a Y chromosome from father, a Y chromosome
from the father would be a boy, would be a boy. Okay, that is X and Y. Be a girl, that is वो गर्ल क्या होगी, X X. तो बच्चों, assertion is sex of a child in human being is determined by the type of chromosome he or she inherit from her father or his father. तो द चाइल्ड हु इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम, चाइल्ड जो भी एक्स क्रोमोसोम लेते हैं अपने फादर से अगर चाइल्ड एक्स क्रोमोसोम ले रहा है, दैट मीन्स सी विल बी ए गर्ल चाइल्ड. एंड व्हाइल अ चाइल्ड हु इनहेरिट वाई क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर, चाइल्ड जो अपने फादर से वाई क्रोमोसोम को इनहेरिट कर रहा है, ही विल बी ए बॉय चाइल्ड. दैट इज assertion is true because sex of a child in human being will be determined by the type of chromosome inherit from father. जिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम हम अपने फादर से इनहेरिट करते हैं, उसी हिसाब से हमारा सेक्स होता है. दिस assertion is true. रीजन, द चाइल्ड हु इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम, जो भी चाइल्ड एक्स क्रोमोसोम अपने फादर से लेते हैं वो गर्ल चाइल्ड होते हैं, और जो भी चाइल्ड अपने फादर से वाई क्रोमोसोम्स को इनहेरिट करते हैं वो बॉयज होते हैं. द रीजन इज ऑल्सो करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस assertion. इस assertion का ये रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. सो गो थ्रू कोड ए. बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ योर assertion. ओके, तो सो आंसर इज ए. आंसर आपका ए होगा. तो दिस इज assertion रीजन टाइप क्वेश्चन. अब नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज fifth assertion. Assertion or reason is important. अब अगले assertion की तरफ. अगला assertion है that is assertion. Fifth is assertion. Assertion. A genetist crossed a pea plant. Crossed a pea plant. एक जेनेटिस्ट ने पी प्लांट को क्रॉस कराया. हैविंग वायलेट फ्लावर. हैविंग अ वायलेट फ्लावर. हैविंग अ वायलेट फ्लावर विथ पी प्लांट. विथ पी प्लांट. with pea plant having white flower. Having a white flower. White flower. He got all violet flower. He got all violet flower. उसको उसके सारे फ्लावर वायलेट. इन फर्स्ट जनरेशन. इन फर्स्ट जनरेशन मीन्स F1 जनरेशन. ओके, इन F1 जनरेशन. इसका रीजन, white color gene is white color gene. White color gene is not passed on to next generation. On to next generation.
ओके, तो दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन। असर्शन, एक जेनेटिक्स ने क्या किया, पी प्लांट जिसके वायलेट फ्लावर थे उसको उस पी प्लांट के साथ क्रॉस कराया जिसके व्हाइट फ्लावर थे, और वो केवल वायलेट फ्लावर F1 जनरेशन में प्राप्त किया। तो वायलेट इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट, तो F1 जनरेशन में वायलेट कलर जो होगा वही आएगा, बिकॉज वायलेट इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट फ्लावर। तो असर्शन क्या है, असर्शन इज ट्रू। व्हाइट कलर जीन इज नॉट पास्ड इनटू नेक्स्ट जनरेशन, ऐसा होता नहीं है, बिकॉज वी हैव स्टडीड अबाउट द डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स, तो वो रिसेसिव रहते हैं। तो व्हाइट कलर जीन इज नॉट पास्ड ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन, दिस इज रॉन्ग। ओके, तो विच कोड इज फॉर दिस? असर्शन आपका जो है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, आंसर इज सी। योर आंसर इज, आंसर क्या हो गया, सी हो गया। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। अब अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ। असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिए। असर्शन, रीजन, 4 कोड्स रहते हैं और उसी 4 कोड से आपको आंसर सेलेक्ट करने होते हैं। नाउ सिक्स्थ असर्शन इज, अब हम लोग सिक्स्थ असर्शन की तरफ। Sixth assertion, sex of a child, sex of a child, sex of a child is determined by the father। जो चाइल्ड का सेक्स होता है वो फादर से ही डिटरमाइंड होता है। फादर डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड, नॉट द मदर। रीजन दैट इज द मदर इज हेट्रोगैमेटिक, द मदर इज हेट्रोगैमेटिक, गैमेटिक। ओके, तो सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय फादर, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। रीजन, मदर इज हेट्रोगैमेटिक, दिस इज नॉट करेक्ट। हेट्रोगैमेटिक अगर मदर होती तो सेक्स ऑफ ए चाइल्ड वुड बी सेक्स ऑफ ए चाइल्ड जो होता वो मदर से डिटरमाइंड होता, बिकॉज फादर इज हेट्रोगैमेटिक। सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय फादर, इट इज ट्रू। एंड रीजन में मदर इज हेट्रोगैमेटिक इज नॉट करेक्ट। अगर यहां रहता फादर इज हेट्रोगैमेटिक तो बात बन जाती। तो मदर इज हेट्रोगैमेटिक, मदर में कौन से क्रोमोसोम, XX, दिस इज होमोगैमेटिक कंडीशन। फादर XY, दिस इज हेट्रोगैमेटिक कंडीशन। ओके, तो हु इज हेट्रोगैमेटिक? Father is heterogamic, not the mother. So sex of a child is determined by father is true, and the reason that mother is heterogamic is false. So answer is, your assertion is true and the reason is, but reason is false. किस कोड में है? C. So answer will be C. Answer हो गया आपका C. Assertion is true but reason is false. Seventh question assertion. ये assertion A, that is expression of a dominant trait, expression of a dominant trait, expression of dominant trait is common in population, is common in population। पॉपुलेशन में जो डोमिनेंट ट्रेट है वो कॉमन है। ओके, दिस इज ट्रू। रीजन, दैट इज expression
alleles for recessive trait is less common. Trait is less common. Okay. Expression for dominant trait is common in population. This is true. क्योंकि dominant traits जो होते हैं वो population में common है. और region है alleles for recessive trait is less common. This is absolutely wrong. Region is false. This is false. This is true. Which codes for this? This is code C. That is assertion is true but reason is false. So answer is C. Answer हो गया आपका C. Okay. अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. 7th and 8th assertion. Now, mother sex of a child जो होता है वो फादर ही डिटरमाइन करते हैं. दिस इज eighth assertion. Assertion eighth और यहां रीजन. Assertion is 3 earlobe. Free earlobe is a dominant trait. Is a dominant trait. फ्री ईयरलोब जो है डोमिनेंट ट्रेट है. इसका रीजन है इट इज मोर कॉमन. इट इज मोर कॉमन as it is expressed in homozygous and heterozygous condition. ओके. फ्री ईयरलोब जो है डोमिनेंट ट्रेट है. दिस इज ट्रू. ओके. एंड इट इज मोर कॉमन एज इट इज एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन. दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस होते हैं ये, होमोजाइगस में भी और हेटेरोजाइगस में भी. assertion is true, reason is true, and reason is correct explanation of assertion. Answer is your A. Assertion is true, reason is true, and reason is correct explanation of assertion. So go through A. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th assertion और ये फाइनल assertion of heredity. वीडियोस के अंत तक बने रहिए बच्चों. Assertion now 9th is what? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मेंडल ने दिया था, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से assertion लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment law of independent assortment can be proved only through monohybrid cross. Only through monohybrid cross. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है केवल प्रूव हो सकता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से. आप इसके असर्शन को थोड़ा समझें.
अब रीजन इज in dihybrid cross in dihybrid hybrid cross reason is in dihybrid cross besides the parent combination of trait two new combinations are formed. combination of traits से दो नए combination, two new combinations are formed. दो नए कॉम्बिनेशन बनते हैं. तो बच्चों, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी प्रूव्ड ओनली थ्रू मोनोहाइब्रिड क्रॉस. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस से उसको हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी प्रूव्ड बाय डाइहाइब्रिड क्रॉस. देखिए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्शन में ये है 9th में कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी प्रूव्ड ओनली थ्रू मोनोहाइब्रिड क्रॉस. दिस स्टेटमेंट असर्शन जो है बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कैन बी प्रूव्ड थ्रू डाइहाइब्रिड क्रॉस. डाइहाइब्रिड क्रॉस से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रूव किया गया है. रीजन, इन डाइहाइब्रिड क्रॉस बिसाइड्स द पैरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट, पैरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट के अलावा नए कॉम्बिनेशन भी बनते हैं. दिस इज ट्रू. तो विच कोड फॉर दिस? आपके असर्शन यहां फॉल्स हुए. So D is, assertion is false but reason is true. So answer is D, go through D. Okay? और बच्चों, चैप्टर 8 हेरिडिटी का प्रैक्टिस लेक्चर 2 फ्रॉम, जो कि आज असर्शन और रीजन के रूप में था, यही समाप्त कर रहे हैं. और अगले लेक्चर में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को लेके आएंगे. तब तक आपको थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.